Hello, good evening everyone. Greetings from Vardaan. Today night we have come to you with a special session, and this session I'm sure will be very useful for all the new moms or the parents who are going to be parents very soon. So today we are going to discuss about feeding of your infant. What do you mean by infant? Infant means the first 1 year of life, medically speaking. But at Vardaan, what we say is the golden period extends till 2 years or first 2 years of your life. So we are going to discuss that what kind of feeding is needed for your baby when he is in infancy from a medical point of view as well as spiritual point of view. So we will start from the newborn period. When you are a mom of a newborn baby, what should I feed? How should I feed and why should I feed? So there is no controversy in that particular age. For first 4 to 6 months, we as pediatricians suggest breastfeeding. And breastfeeding has to be exclusive breastfeeding. What do you mean by exclusive breastfeeding? Exclusive breastfeeding is a very favorite term for all the pediatricians. If anybody says that what kind of feed I should give to my baby, सब लोग बोलते हैं कि exclusive breastfeeding. And exclusive breastfeeding का मतलब है no feeds nothing other than the breast milk. That means not even water. So आपके newborn baby को आपको सिर्फ breastfeed पिलाना है और कुछ भी नहीं पिलाना है. Only medicines if it has been prescribed, but nothing other than the breastfeed should go into the baby's tummy because these babies are very small and very delicate. And उनका जो stomach system है, digestive system है, that is not at all mature. So it cannot handle the outside feeds which are heavier, which are difficult to digest. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि exclusive breastfeeding अपने बच्चे को पिलाइए for first 4 to 6 months. तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि when can we start the breastfeeding after the delivery? The answer to that question is as early as possible. क्योंकि जब आपका बच्चा का बर्थ होता है या डिलीवर होता है तो फर्स्ट 1 hour of his life is he is very active. He is really looking for something, that he is looking for his parents. He is eager to meet you and he is eager to get his nutrition. So अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो वी एज डॉक्टर्स टेल यू कि भाई विद इन हाफ एन आवर यू शुड इनिशिएट द ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज दैट इज द बेस्ट टाइम. चाइल्ड इज मोर एक्टिव, चाइल्ड इज नॉट एट ऑल lazy or he is lethargic or he is sleepy. No, he is very smart. He is actively looking for the feeds and he will immediately start sucking once we offer the feeds to him within first half an hour. अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो विद इन फर्स्ट 2 hours वी सजेस्ट कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी मामा की तबीयत ठीक हो गई है एंड शी इज एबल टू टेक केयर ऑफ द बेबी, वी कैन स्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग. So that is for first few months. For how long we should give the breastfeeding? हमें कितनी देर तक breastfeeding करना चाहिए? तो उसका आंसर है up to 2 years. लेकिन ओनली breastfeeding कब तक कंटिन्यू करना है, एक्सक्लूसिव breastfeeding कब तक कंटिन्यू करना है, वो हमें फर्स्ट 4 to 6 months तक, आइडियली अप टू 6 months. लेकिन इन बिटवीन 4 to 6 months, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन क्लूज, वी कैन स्टार्ट द आउटसाइड फीड. तो पहले 4 महीने तो देर इज नो डाउट ब्रेस्ट फीडिंग ओनली. 4 to 6 months is the transition period depending upon your baby's weight, depending upon the breast milk quantity, depending upon कि कैसे आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ही इज शोइंग एनी क्यूज कि भाई वो जैसे ही आप खाना खाना शुरू करते हैं आपको वो देखना शुरू कर देता है एंड ही वॉन्ट्स टू लुक फॉर, ही वॉन्ट्स टू रीच फॉर दोज न्यू फूड्स, ही वॉन्ट्स टू ट्राई. All those things are there, then yes, we can start weaning. Otherwise, ideally up to 6 months, we should continue only breastfeeding. तो एक और क्वेश्चन आता है न्यू मॉम्स के लिए, न्यू पेरेंट्स के लिए कि फॉर्मूला फीड कब देना है हमें. कैन वी गिव फॉर्मूला फीड टू आवर बेबी? आइडियली स्पीकिंग, नो. फॉर्मूला फीड शुड बी गिवन विद द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ओनली.
क्योंकि ज़्यादातर मदर्स की कंप्लेंट होती है कि हमारे को तो दूध ही नहीं आ रहा है, दूध बहुत कम है, या हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, या फिर वो लगातार वो रोता रहता है। तो उसके लिए आंसर है कि बच्चे के रोने के बहुत सारे कारण होते हैं, एंड हंगर इज जस्ट वन अमंग दैट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बेबी व्हाई ही इज क्राइंग, एंड इतने सारे, क्योंकि उसका तो एक ही लैंग्वेज है, वो कुछ भी बताना है उसको रोक के ही बताना है। तो यू हैव टू लर्न टू अंडरस्टैंड योर बेबी, व्हाट योर बेबी इज ट्राइंग टू से और ट्राइंग टू टेल। So your baby can cry because of 101 reasons. He is feeling hot, he is feeling cold, his clothes are hurting you, or he just wants to pass urine, he just wants to pass motion, or something like that. So many reasons are there. So gradually as a new mom, शुरू में बहुत परेशानी होती है, समझ नहीं आता है कि क्यों रो रहा है, and every time when the baby cries we start feeling कि okay अभी इसको feed करा देते हैं, but that is not a good habit. We should try to understand, we should try to talk to him, look at his signs, what he's trying to show, what his face is trying to say, and gradually we will understand, we will definitely learn कि हमारा बच्चा हमसे क्या बात करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, and we become expert. तो उसमें जो है आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराना है, लेकिन फॉर्मूला फीड्स कब कराना है? From your pediatrician's advice only. Because if you ask me, I am a pediatrician working in Kim's Health Trivandrum for last 25 years. And if you ask me, कि भाई how much % of the mothers they genuinely have less milk, I will say less than 1%. But how many people complain of less milk? Lot of people. But that is more in the mind. Because if you are a well mother without any medical complaints, without anything, weight is okay, your diet is okay, there is no reason you will not have enough milk for the baby. It is all in the mind. If you have made up your mind that yes, you are going to breastfeed, yes, definitely you are going to breastfeed only. So that is about first 4 to 6 months. Formula feed कब देना है? जब मदर अनफिट होती है, मतलब मदर इज नॉट मेडिकली फिट, she is not able to take care of herself, or she is medically sick, or she is on some medications, or she is having some infections. In that rare situations only we say okay आप formula feed दे सकते हैं. And here I would like to say that why you should breastfeed. इतना ज़्यादा क्यों प्रेस करते हैं हम लोग pediatricians पेरेंट्स को कि भाई breastfeed ही कराना है और कुछ फीड नहीं देना है, कुछ वाटर नहीं देना है? Because there is one unique quality of the breast milk. Breast milk has immunoglobulins. And what are these immunoglobulins? These are the protective antibodies. These are the protective antibodies which mother has produced in her body throughout her lifetime. जो मदर को जितनी भी डिजीजेस हुई हैं अभी तक, उनका जो उनके दिमाग, उनके शरीर में जो उनकी एंटीबॉडीज बनी हैं, that antibodies are gradually passed through breast milk to your baby. So उसको फ्री का प्रोटेक्शन मिल जाता है. In fact we say this is the first vaccine every parent should give to their baby, because actual vaccination से पहले ही उसकी प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी शुरू हो जाती है थ्रू योर ब्रेस्ट फीडिंग. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही देना है आपके बच्चे को. उसके बाद आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, अराउंड 4 to 6 months. जब हम रूटीन वैक्सीनेशन विजिट्स पे जाते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि आपके बच्चे का वेट ठीक से ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. आपके ग्रोथ सेंटाइल्स पे, ग्रोथ प्लॉट करने पे हमें सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है. एंड इफ यू आर ओके विद द सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ, देन वी जस्ट कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग ओनली. बट इफ वी फील कि भाई ब्रेस्ट फीड पे ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही है, एंड मदर ऑल्सो फील्स कि भाई ब्रेस्ट फीड इतना अच्छा नहीं आ रहा है, या इट इज रियली लेस क्वांटिटी, दैट इज द टाइम वी थिंक अबाउट शिफ्टिंग योर बेबी टू द आउटसाइड फीड्स. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई आउटसाइड फीड में क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए. तो उसके लिए हमारी जो रूटीन वीनिंग एडवाइस जो एज ए पीडियाट्रिशियन आई वुड लाइक टू गिव टू ऑल द न्यू पेरेंट्स इज कि पहले आप डिसाइड करिए कि आपको आउटसाइड फीड देना है कि नहीं देना है. यस, देना है. तो उसके बाद हम शुरू करेंगे विद द सिंपलेस्ट फीड्स. वी कैन स्टार्ट विद द फॉर्मूला फीड्स विच वी हैव नॉट गिवन टिल नाउ,
because that will be a mixing medium for all other feeds which we are going to give in the future. So you can start with any formula feed, stage 1 और stage 2. Usually up to 6 months हम stage 1 यूज करते हैं and after 6 months जो है stage 2 formula feeds यूज करते हैं. There are different brands of these formula feeds in the market. There is no major difference between these brands. So you can go for any brand and start feeding. Only thing is, when you start formula feed, we should really take care of hygiene. क्योंकि आपकी बॉटल्स या यूटेंसिल्स जिसमें भी आप दूध मिक्स कर रहे हैं, जो पानी ले रहे हैं, that has to be really clean. क्योंकि जब तक हम ब्रेस्ट फीड करते हैं तब तक हमें इन्फेक्शन का कोई टेंशन नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं होगा बच्चे को. लेकिन जब हम फॉर्मूला फीड शुरू करते हैं तो वी आर लिटिल वरीड कि भाई अगर आपकी प्रैक्टिसेस क्लीन नहीं है तो देयर इज अ चांस दैट लिटिल बेबी कैन गेट इन्फेक्शन. तो उसमें आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. अगर आप बॉटल फीड कराने वाले हैं तो वी यूजली एडवाइज कि आपके घर में 1 या 2 नहीं, कम से कम 5-6 बॉटल्स होनी चाहिए विच शुड बी केप्ट स्टरलाइज्ड. मतलब उनको आप धो के क्लीन करके निपल्स के साथ एंड विद द कैप क्लोज्ड यू शुड कीप देम स्टरलाइज्ड एंड कीप देम रेडी इन द फ्रिज सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन द नाइट. बिकॉज नाइट में कई बार मदर्स टायर्ड होती हैं और अचानक से अगर आपको क्लीन बॉटल अवेलेबल नहीं है एंड आपको कोई और बॉटल यूज करनी पड़ती है, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर द इन्फेक्शन. तो एक बार हमने फॉर्मूला फीड शुरू कर दिया, उसके बाद हम शुरू करेंगे कोई भी अवेलेबल फूड. लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, जो आपका रूटीन लोकल फूड है, जो आपके फैमिली में डाइटरी पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं कि कौन सा फीड बेस्ट रहेगा, क्या देना चाहिए हमारे को. आइडियल इज कि जो आप अपने फैमिली में यूज कर रहे हैं. तो इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, अगर आप सीरियल्स राइस खाते हैं तो राइस शुरू कर सकते हैं. अगर आप व्हीट बेस्ड खाते हैं तो व्हीट से शुरू कर सकते हैं, सूजी से शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई भी. तो वी विल स्टार्ट द सीरियल्स, देन ग्रेजुअली वी विल इंट्रोड्यूस द वेजिटेबल्स वन बाय वन एंड वी विल इंट्रोड्यूस द पल्सेस. ज़्यादातर जगहों पे जो ट्रेडिशनली हम लोग यूज़ करते हैं, अन्नप्राशन या कोई भी मतलब ऐसे वीनिंग सेरेमनी होती है, उसमें कई जगहों पे 9 तरह के 9 सीरियल्स या 9 grains टुगेदर that practice is there. But as a pediatrician, we don't advise. We say that whenever you are going to introduce any new food, introduce one by one. Do not mix the things together. Do not mix all the new foods together and give it, because in case your baby is allergic or baby develops any kind of reaction to these foods, we will not understand कि कौन से फूड से रिएक्शन हुआ है. तो आपको क्या करना है, अगर आपको सीरियल्स इंट्रोड्यूस करना है, चपाती है या चावल है, सिर्फ चावल, आपको सिर्फ चावल देने हैं शुरू में 1 या 2 फीड्स, 2 या 3 दिन तक लगातार आपको धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ानी है. और आपको देखना है कि बच्चा ले रहा है कि नहीं ले रहा है. अगर वो बच्चा ले रहा है 2-3 दिन तक, उसको कोई परेशानी नहीं है, बॉडी में रैशेज नहीं है, वॉमिटिंग या डायरिया नहीं है, तो इसका मतलब कि बच्चे ने वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया है. उसके 3-4 दिन के बाद आप कोई नया फूड और आइटम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कैरेट्स हैं, बॉइल्ड बनाना है, या फिर एप्पल्स हैं, कोई भी मतलब एनी फ्रूट और एनी वेजिटेबल, यू कैन बॉइल इट एंड मैश इट एंड देन गिव इट and use the mixing medium as milk, whatever formula feed you have started. तो उसको मिक्सिंग मीडियम बना के आप उसको खिला सकते हैं. शुरू में हम या 2 या 3 ही फीड्स देंगे, बाद में धीरे धीरे हम जो है आउटसाइड फीड्स के पोर्शन साइज एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे. When we introduce the outside feed, there will be a change in the stooling pattern. शुरू में जो ब्रेस्ट फीड पे बच्चा जो है कई बार बहुत सारे मतलब 8-10 बार पॉटी करेगा, लेकिन जैसे ही हम बाहर का फीड्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो कई बार पॉटी थोड़ी हार्ड हो जाती है या क्वांटिटी उसकी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है. तो उन सब चीज़ों से घबराने की कोई बात नहीं है. अगर बच्चा कंफर्टेबल है, ही इज एक्टिव, ही इज स्मार्ट, ही इज प्लेइंग, ही इज फीडिंग वेल, देयर इज नथिंग टू वरी एब्सोल्युटली. तो ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप हैं एंड धीरे धीरे बच्चे की जो बॉडी है वो एडजस्ट कर लेगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें क्या नहीं देना है.
तो जो हम एज ए पीडियाट्रिशियन एडवाइस करते हैं अप टू 9 मंथ्स यू शुड नॉट गिव एनी एलर्जेनिक फूड्स, मतलब जो जनरली फूड जो जैसे आपका फैमिली में अगर एलर्जिक टेंडेंसीज हैं या मदर को एलर्जीज हैं या जनरल एलर्जिक टेंडेंसीज हैं, तो इन दैट केस जनरली द फूड्स विच आर मोर एलर्जेनिक शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर 9 मंथ्स। तो हम बोलते हैं कि शुरू में जो 6 से 9 महीने के बीच में आप सीरियल्स दे दीजिए, वेजिटेबल्स दे दीजिए, फ्रूट्स दे दीजिए, एंड उसके बाद ही हम धीरे धीरे जो है एग वी कैन इंट्रोड्यूस द नट्स एंड द नॉन वेज आइटम्स आइडियली शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर 1 year. After 1 year we can introduce everything actually. So because till 1 year अगर बच्चे ने सब कुछ डाइजेस्ट कर लिया है and he is growing up well, तो after 1 year we can give everything whatever the family is eating, whatever the family diet is there. So we can introduce the normal milk instead of formula milk. We can introduce non-veg items. We can introduce nuts. We can introduce anything, whatever. So as per a pediatrician, a child should take a diet from the family pot at around 1 year. तो शुरू में ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, एंड उसके बाद वंस द चाइल्ड इज 1 year देयर इज नो नीड टू थिंक कि हमें ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, वो देना है कि नहीं देना है. यू कैन गिव एनीथिंग. So that is about the diet of your small baby when he is in the infancy phase. Few things here I would really like to mention as a pediatrician, because this is the time when you are making the dietary habits for your child. तो आपको as a parents you should be really responsible कि you should include good diet. And good diet का मतलब है कि cereals, vegetables, fruits in a balanced proportion, and we should really try to prevent or exposure to fast food, highly processed food, the junk food, the food which is rich in so much sweets, food which is very salty. So what I am referring to the current generation of the fast foods like pizza, burger, chocolates, chips, cola drinks. All these things, they are not good. They will not show their effect immediately, but yes, they do affect the growing body systems. So wherever possible, whenever possible, we should always inculcate the feeding habits of taking the homemade food, clean food, enough in quantity but not too much overfeeding, because sometimes the parents keep on running after the children that they should be feeding all the time, but those habits will be lifelong habits. They are not good habits. So let the child take according to his appetite. Let the child should not be overfed. Let the child play enough. Let the child take by himself. So that is one thing which is very important. The feeding habits are being introduced in your baby now. Whatever the templates you are making, that will be there lifelong. So be cautious, be conscious about what you are feeding, how you are feeding, and what you are doing during feeding. That is very important. Now we will just talk about the spiritual aspects of nutrition. One thing is that as new parents, we are all very much worried that what should I give? Should I give this fruit? Should I give fruit juices? Should I give vegetables? How can I give nuts? What kind of nuts I should give? What kind of non-veg I should give? But have we ever thought that what kind of nutrition we are giving for our baby's mind, our baby's brain? People will say, yes, we are giving DHA, we are giving nucleotides, we are giving that will promote the growth of the brain. But as parents, as the environment which you are creating during feeding time, that is very important. The environment in which the child is eating food.
the kind of emotions and feelings which you are transmitting during feeding your baby, the kind of talking which you are doing to your child when feeding, the kind of stress or emotions you are bypassing, or the kind of quality time you are giving to your baby while feeding, which is important. In fact, in Vardaan, we always concentrate on golden period education. And the golden period education means what we are trying to educate to our baby during this golden period. People are not even aware, and they don't even think that can we educate during these first 1 year or 2 years of life. But as golden period educator, we emphasize, yes, you can educate your baby definitely in this golden period, which actually starts even before conception. Now, when your baby is a newborn baby, or when your baby is like 3 months, he can't even roll over, he can't even sit, people will say that what kind of education, what should I teach to my baby? The thing is, you can teach anything. You can tell them the stories, you can tell them about food, you can tell them that how your day went, you can talk to him, you can just say that how are you feeling, do you feel that this food is tasty or not, and just look at the expressions what your baby is giving to you. Rather than feeding through somebody, or getting engrossed in your mobile talks, or getting engrossed in Zoom calls and feeding at the same time. That is not quality feeding. Try to give quality feeding to your baby. That is very, very important. Because more than the nutrition, the physical nutrition which you give, the mental and emotional nutrition is very, very important. So with that, I will finish this session today. I hope that this session will be very important to you. And as new parents, we at Vardaan always focused on holistic development of your baby. So keep connected to us. Have a peaceful night. Good night, and have a peaceful sleep. Thank you. Thank you all.